सो आज का जो एपिसोड है शो उसको सुनने के बाद आई थिंक झगड़े हो सकते हैं एपिसोड में। रिमाइंड्स मी फ्रॉम झगड़ा। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई शादी के सेकेंड ईयर में किस बात पे हुई थी? आई थिंक मैं घर का काम नहीं करता था और मर्द घर के काम क्यों नहीं करते हैं, इसके ऊपर जो एक चर्चा की जाए शो कि ऐसा क्यों है इंडियन सोसाइटी में मर्दों को घर का काम करने में मौत क्यों आती है। I liked how you've stolen my dialogue. Yes. To tell you the truth, हमारी लड़ाई इस बात पे हुई थी that Karan wanted that we should have a maid जो कपड़े धो देगी और सुखा भी देगी, and I was against it because we did not have a very good maid. तो वो barely झाड़ू पोछा और बर्तन देख पाती थी, तो कपड़े अगर मैंने उसके ऊपर छोड़ दिए तो पता नहीं कैसे ही धुलेंगे। Okay. Secondly, it was not even like manually कपड़े धोने हैं, it was just कि सूख गए हैं वॉशिंग मशीन में, बस उनको डालना है, right? और सुखाने डालना है, सिर्फ सुखाने डालना है कपड़े। लेकिन करण was not ready to do that and we used to have arguments after arguments about the same thing over and over again, where he was like, why can't you just pay her to do it? And I used to be like, why should I pay her, because whatever she's currently doing is also not very good. And in all of this Karan never bothered to check that, oh तो बाकी का काम भी अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम क्या दूसरी मेड ढूंढे या कुछ करें। He was just bothered that मुझे नहीं करना है, अब तुम देख लो तुम्हें आउटसोर्स करना है या तुमको देखना है। तो कमिंग बैक टू दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। फ्रॉम देयर वी हैव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। नाउ वी आर completely an equal household where Karan takes care of a lot of the chores around the house, and any decision that we make, any shopping that we do for the house, it's always a joint thing. So welcome to another episode of Happily Whatever After. So शोकी ने एक बात कही कि मैं काम क्यों नहीं करता था, करेक्ट? सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज शो मुझे याद आती है कि बचपन में जो आप देखते हो, करेक्ट, वो आप अपनी शादी में रिपीट करते हो। प्रोबेबली दैट हैपेंड विथ मी, क्योंकि मैंने अपने मॉम, चाची, दादी सबको घर का काम करते हुए देखा था, लेकिन नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स मेन इन द हाउस even tried to take the additional responsibility of the house, right? For them it was more of like going out, earning money and providing with for the money, and whenever they come home उनको खाना मिल जाए, correct? So that is what technically I saw while I was a child, and I saw that growing up, and that somewhere got engraved into my mind that कि जो घर की औरतें होती है वो घर का काम करती है, मर्दों को सब कुछ घर पे प्लेट पे सजा के दिया जाता है, उनकी सारी जरूरतें पूरी की जाती है, whether it is emotional load, whether it is a mental load, whether it is a physical load of women, they are not being noticed, and that is what happened. I never thought that what kind of issues it will create in my marriage. I only came to know that this is a very important aspect of a marriage. I only came to know that अगर मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, that is technically damaging my relationship. It is damaging a lot of things. दिखने में ऊपर ऊपर से सब कुछ सही लगता है, बट जो एक छोटी छोटी चीजें रिलेशनशिप में होती है वो इधर से ही शुरुआत होती है। आई वुड से मैरिज सही होना, गलत होना, अगर हम टीम बन के काम करते हैं तो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। दैट इज व्हाट आई लर्नड इन अ लॉन्ग रन। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेन गो थ्रू इन रिलेशनशिप कम फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। I think I was also operating from my childhood conditioning only, because I never had these kind of conversations with you before marriage, because I was under the assumption कि ये तो normal है ना, because my dad used to do all of the things around the house, I used to do around the house, my sister used to do, so ours was a well-oiled machinery. Like mom को हम लोग हर तरीके से किसी न किसी बात में छोटी छोटी चीजों में हेल्प करते रहते थे। Correct. ऐसा नहीं था कि हम लोग आके बैठ जाते थे ये और सब कुछ, like पापा ऑफिस से आके बैठ जाते थे और कुछ नहीं होता था। Before leaving to office in the morning, my dad would do so many things for us and for the household that I assumed growing up, seeing that okay, this is how a marriage is. There is always an equal partner who are trying to make the whole load around the house lesser. They are sharing the load. They are truly sharing the relationship. So I thought it was a given, it was a default, that is what you are supposed to do. But then I got into your household and I realized that there is so much difference that तुम्हारे घर में washing machine भी नहीं है. Correct. You guys prefer कि maid will do everything. And I am like इतने सालों से मैं अकेले रह रही हूँ, मैंने खुद के लिए भी washing machine ली. So they were like always things that I would have preferred doing in a different way around the house, but you guys were fully outsourcing things. उसका reason है शो. I remember that when I was a child, my grandmother used to wake up at 5 o'clock और वो
मेरे को याद है उससे मैं ना क्रिकेट भी खेला था बचपन में, करेक्ट? हम सब उसको ने खेला है सोटी उससे। सोटी बोलते हैं, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल इट, राइट? एंड शी यूज्ड टू लाइक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 से लेके 6:30 तक कपड़े धुलते थे घर पे. दैट वाज हर फर्स्ट जॉब टू डू इन द मॉर्निंग. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ फिजिकल लोड. और आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली इंडिविजुअल clothes. I'm talking about 7-8 people living in a joint family and their clothes being washed in an hour. So you can imagine the kind of physical load that she might have been going through. So what I'm trying to say is that कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, notice करोगे, show that कि when you told that कि washing machine घर पे नहीं थी, we were so much engraved that कि कपड़े हाथ से ही अच्छे धुलते हैं. अगर आप हाथ से कपड़े नहीं धोगे तो आपके कपड़े अच्छे नहीं धुलेंगे. Correct? Washing machine is also currently we are living in a technologically advanced world. We have been progressed. I'm talking about probably 30-35 years back. And when we are talking about when we got married, I'm also talking about 10 years back from today, right? At that point of time also there was a taboo in my house saying that, not a taboo, but I would call it that की notion in the head that washing machine जो है वो कपड़े खराब कर देती है, हाथ से softness आती है, हाथ से धोगे तो अच्छी चीज होती है. So these are all smaller cues that a family thinks about और वो उनके दिमाग में फीड किया जाता है, राइट? कि ऐसे ही होनी चाहिए चीजें. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स अराइजिंग. सो मेरे घर पे यही था कि अगर मेड कपड़े धोएगी तो सब कुछ ठीक है. एंड कमिंग बैक टू, तुम अगर ये बोल रहे हो कि 10 साल पहले तक योर फैमिली हैड दैट नोशन, नाउ आई एम गोइंग टू अगेन टेक यू बैक टू माय चाइल्डहुड एंड द वे माय फैमिली वाज शेप्ड. दैट व्हेन द फर्स्ट वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन केम अप इन द मार्केट, द ग्रीन एंड व्हाइट one, I think a lot of you will agree to it that was the only model available, right? We had that back when I was in 7th 8th standard. That was good. My dad had taken loans to take that washing machine so that there is much lesser load on my mother to manage one less task around the house, or to manage one less thing that the maid needs to do. Correct. About the whole chores around the house, right? So see the difference again, guys, in the upbringing, in the childhood that we have seen in the same era together. Right? Where Karan is trying to tell me that 30 years ago these things didn't exist in his life, but in my life 30 years ago also these things were unheard of, but it existed. My household had these things in order to make our lives easier. Yeah, there is a lot of thing which comes from our childhood, so you need to understand. What we are trying to talk about and tell you guys is a lot of Indian men think that जो घर का काम होता है वो बहुत बड़ा पहाड़ होता है उनके लिए, and you know they don't want to do all of those things. It's not about laziness, but it is about how we are being raised, what we have seen while we were growing up. What are those expectations that our family never engraved into us that you are also supposed to do. So lot of men think that कि यार मैं घर का काम नहीं कर रहा हूँ तो मुझे laziness का टैग दिया जाएगा, मैं अच्छा नहीं हूँ. But it is also about how you saw your childhood, what was there in your childhood. And I would disagree to what you are saying, Karan, because we made this reel. I just put up footage of us doing the housework together, and every other man in the comment section went crazy that, oh, why should he contribute in the household because he's making money? Is she making money? If she's not making money, then she should just do the housework and be happy with it. Correct. So I also want to know from these men who are trying to think like this, and many men think like that if they are the financial providers of the house, then they should not be working in the house. Yeah. So similarly now women are also financially providing for the house, so ideally they should not be working for the house as well. But उनको भी ये बोला जाता है कि नहीं, तुम तो खाना भी बनाओ, तुम ऑफिस भी जाओ, तुम बच्चे भी संभालो, तुम बच्चों का खाना भी पैक करो, तुम बच्चों की यूनिफॉर्म भी देखो, बच्चों का होमवर्क भी देखो, और उसके अलावा अपना ऑफिस भी देखो, अपनी सैलरी भी कमाओ, और फाइनेंशियली भी घर में कंट्रीब्यूट करो. So why are men like given the discount? I think I would call it as a hypocrisy. Very simple. होता क्या है कि again the way society has shaped us, the way society has created this norms that whether the woman of the house is earning, whether the woman of the house is going to take a job, they are responsible for doing all the jobs of the home. Men are only supposed to be this, you know, men को एक shape दिया गया है masculine energy के साथ कि आपको घर का काम सूट नहीं करता. You are not ready to provide for the mental load or for the emotional load or for the physical load for housework. What I remember is that कि जब भी हमारी नई नई शादी हुई थी, and I remember that कि तुम सवेरे उठ के पहले टिफिन बनाती थी,
तुम सवेरे उठ के पहले घर का काम कर लेती थी. You used to not think about yourself, and that is how the way I used to think. मैंने कभी वो नोटिस ही नहीं किया, और मुझे बाद में पता चला दैट कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. आई रिमेंबर दैट कि मैं रुकता था कि तुम मुझे कोई टास्क असाइन करोगी और मैं वो टास्क करूंगा घर पे. इट वॉज लाइक मैं घर पे भी ऑफिस की तरह काम कर रहा था. इट वॉज मोर ऑफ दैट कि यू वर माई मैनेजर. इफ यू गिव मी अ टास्क देन ओनली आई विल डू द थिंग्स. आई नेवर टुक दिस स्टेप in the initial stages of our relationship or marriage, is that I am also equally responsible for this household. I am also equally ready to take the tasks which are ready. मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, तुमने ले ली है responsibility तो तुम देख लोगी वो चीजों को. मैं क्यों उस चीज में पढ़ूं? I used to always have this block, or you can say a wall in front of me for doing these household work. And I want to point it out to you guys that again we are back to square one, that this men avoiding housework was not about laziness, was not about habit. It was, at this point of time, it was generational, it was emotional, it was cultural, that what you have seen in your house, that is the normal for you. If Karan has seen that हाँ मेरे कपड़े प्रेस होके मेरी अलमारी में लगे हुए मिलते हैं मुझे, तो Karan never had to think about कि oh when is the press वाला going to come, who is going to take how much कपड़े per कपड़े कितना पेमेंट होता है और क्या होता है. And I remember Karan and I even had this fight over the fact कि जहाँ पे हम रहते थे उस घर में जो प्रेस वाला बंदा होता था वो आता था और तुम अपने सारे कपड़े दे देते थे. And I used to be like ये तो घर के कपड़े हैं, तुमको इस पे क्यों प्रेस करवानी है? Why it is per कपड़ा 7 rupees? Why are you wanting to give so much money, like extra 70-80 rupees for just like घर के कपड़े? And you wanted everything to be like nice, perfect. हाँ एकदम perfect. तो I was like कि हाँ ये तो मतलब तुम्हें तो घर की चड्डी भी प्रेस की हुई चाहिए होती है. तो that is what the kind of fights we used to have. Again coming back from the point that हम लोगों के घर पे प्रेस वाला was not normal, it was a luxury कि हम किसी लॉन्ड्री में पैसे देके प्रेस करवा रहे हैं. हम रोज अपनी यूनिफॉर्म खुद प्रेस करते हैं. And yet see the irony again in the household. Where I had washing machine, we used to iron the clothes ourselves. Where Karan did not have washing machine, the maid used to do it. There used to be a regular press wala who used to come every single day to take mom and Karan's clothes. So here was the, again coming back, why I'm saying that it was generational. It was more about what you have seen growing up. That is what becomes your normal, and then you start fighting over it, right? So at this point of time, we want to bring reality of modern marriages today, right? We don't raise men around the house to be emotionally competent or domestically capable, but एक लड़की को बचपन से ये बताया जाता है कि बेटा देखो तुम्हें तो खाना भी बनाना है, तुम्हें तो ये भी करना है, शादी के बाद तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, शादी के बाद ससुराल में तुम ये करोगी. It's like a deeply ingrained thing, but what everybody needs to realize is that housework is not a gendered thing. अगर for example एक लड़का अकेला रह रहा है कहीं पे और उसको से सही मेड नहीं मिल रही है या सही कुक नहीं मिल रहा है, तो क्या वो भूखा मरेगा? बिकॉज देयर इज नॉट अ वुमन इन द हाउस. करेक्ट. इट्स अ बेसिक लाइफ स्किल. हाउस वर्क इज अ बेसिक लाइफ स्किल. फिर तुमको कपड़े भी खुद से धोना आना चाहिए, तुमको अपने बर्तन भी खुद धोना आना चाहिए, तुमको खाना बनाना भी आना चाहिए. करेक्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन हाउ विल यू सर्वाइव? इट इज नॉट कि तुम वेट करोगे कि अच्छा अब मैं अकेला सारा काम नहीं कर पा रहा हूँ तो इधर आई विल गेट अ मेड टू डू एवरीथिंग. अगर वो आई काम किया ढंग से, नहीं किया तो ठीक है, नहीं तो फिर अब मम्मी बोलेगी कि चलो एक काम करते हैं, तू वहाँ पे अकेला है, तेरे से सब नहीं होता, शादी करा देते हैं. Then you are technically going to, you marry a maid, which is, the glorified maid, what we call. It is very, very, scary thinking back today. And I feel bad that I was this kind of a man back then. But I think the whole idea of what we are trying to say is living in a modern day society, you need to be aware that you need to be responsible for your own household. You need to be responsible for your own self because you are living in the house. And if you are not taking these responsibilities, then, you are stepping towards, a disastrous marriage, this emotionally unavailable marriage that you are in. And that is where the whole reality of modern day society comes in. Because what I am trying to say show is that कि पहले शायद 30-35 साल पहले जो चीजें होती थी वो बहुत डिफरेंट तरीके से होती थी. Today, the world which we are living in as a fast-paced world, we have lot of things available over apps. We have lot of things available over clicks. So
हम और फास्ट होते जा रहे हैं, हमारा ब्रेन और फास्ट होते जा रहा है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी विल नॉट learn to have those survival instincts. In fact, what I believe is in today's day and age, we have lot of things which are easy, we have access, but the mental load that we are talking Still about remains, is yeah. still, like, why I'm trying to tell you is that कि शो 2-3 दिन पहले if you remember हमारी और तुम्हारी बात हुई थी, राइट, कि मेड कब आएगी एंड कुक कब आएगा. Yeah. हमारे पास सारी चीजें हैं, बट देन व्हाट हैपेंड इज, मैंने ये चीज नोटिस करी कि तुम सवेरे जैसे ही उठ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ा मेंटल लोड ये कि कुक आज आएगा या नहीं आएगा, मेड आज आएगी या नहीं आएगी. द मोमेंट यू वोक अप यू सॉ योर फोन बिकॉज यू वर थिंकिंग कि मेरे को इसका मैसेज आया है या नहीं आया है, कुक Yeah. ने एक मैसेज किया, छुट्टी तो नहीं मारेगा. सो दैट व्हाट वाज हैपनिंग इज आई स्टार्टेड टू नोटिस दैट दो वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड व्हिच इज फास्ट पेस्ड, बट देयर इज अ मेंटल लोड दैट यू आर टेकिंग. Yeah. भले फिजिकल लोड आपने पास ऑन कर दिया है, जो मेड्स को, कुक को, सबको पास ऑन कर दिया है, बट देयर इज ऑल्सो यू नो दिस मेंटल लोड दैट वुमेन गो थ्रू. It's like after you get married, you're automatically the house manager. करेक्ट. You are by default supposed to know कि कब कौन आने वाला है, आज आया है तो क्यों नहीं आया है, और आएगा तो कितनी बजे आएगा, Yeah. एंड अगर ये खत्म हो गया है घर में तो तुम्हें क्यों नहीं पता था, तुम्हें Correct. पहले ऑर्डर कर देना चाहिए था. And it happened with us for a very long time, right? yeah. And when we were actually living with family also, it was always like when you used to about to be entering into the kitchen to help me, you were always told कि अरे नहीं बैठ जा मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ टाइप थिंग. तो the family also reinforces it even in adulthood Yeah. that no, men don't belong in the kitchen. Yeah. They are supposed to do everything else outside the house. Inside the house they are supposed to just chill. Yeah. And this kind of creates that mentality or understanding in men that so I'm supposed to chill, and you were also in the house. So what happens is, let me break this down very simply. तुम्हारे दिमाग में ये setting होती है कि घर is a place to chill. चिल पिल वाला हिसाब हाँ, किताब. तो what happens is, if you are married to a person who is home all day, either working from home or even a stay-at-home mom or a Correct. stay-at-home wife or a homemaker for that matter. So what you think is घर पे रहना is equal to chilling. Chilling, yeah. So जो भी घर पे रह रहा है is equal to chilling. But you don't see so much of mental labor going into staying at home. जब आप घर पे होते हो आपको at any given point of time सिर्फ काम दिख रहा होता है अपने आसपास. So that's what no show that ki men will come home and they will say that ki I am tired, I have Yeah. done so many things, but they are not realizing that ki women also staying home, if they are homemaker, they also have multiple tasks to be Yeah. completed. If that is not being completed, they are also going through lot of mental physical load in their life. Yeah. ऐसा नहीं होता कि घर पे बैठ के वो लोग चिल मार रहे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं. Yeah. जैसे कि जैसे ही आप घर पे आओगे और आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को चाय हाथ में मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा, तो they are also not doing. And I personally believe that ki show the day you start looking your marriage not as business transaction, it is the time that you start to turn around your relationship or marriage. Because हम as a men क्या सोचते हैं, अगर शादी करी है, राइट, तो मेरी जो बीवी होगी या जो मेरी पार्टनर होगी वो मेरे सारे घर के काम कर देगी. दैट इज लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. आई हैव डन दिस ट्रांजैक्शन टू गेट अ गुड लाइफ. आई हैव डन दिस ट्रांजैक्शन टू गेट चाय इन I माय have हैंड. paid money to make her do all of these things. Yeah. But no, you have not paid her a salary. Sorry. Yeah. So आपको सैलरी मिलती है. You will उनको always say that. सैलरी भी नहीं मिलती. Yes, that's what I was coming to, right? You will say that कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मेरी जो सैलरी है वो जस्टिफाइड है ना, मैं तो काम कर रहा हूँ. बट क्योंकि घर पे जो होम मेकर है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, दे आर मैनेजिंग योर होम. इट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू से दैट कि मैं टायर्ड हूँ, मैं घर का काम नहीं करूंगा और मैं अपने घर को नहीं देखूंगा. दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस. आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस लाइफ लेसन Yeah. in this marriage. Yeah, and I'm sure after listening to this there will be a lot of people in the comments going like कि even women Yeah. in comments going like कि हाँ तो बट अगर तुम जॉब नहीं कर रही हो और घर का काम कर दोगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा, वो बेचारा पूरे दिन ऑफिस में काम करके आता है. एग्जैक्टली, नो प्रॉब्लम, वो ऑफिस में काम करके आता है तो फिर जब वो ऑफिस से काम करके आता है शाम को 6 बजे, तब फिर होम मेकर्स की भी शाम को 6 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए. Yeah. कि उन्होंने अपना काम सब कुछ करके रख दिया है, खाना बना हुआ रखा है, 6 बजे के बाद आप आओ, खुद गर्म करो, खाओ, बैठो, सबके लिए खाना वाना दो और चिल मारो. फिर उसके बाद ये नहीं हो सकता कि उसके बाद वो गरम गरम रोटियां बना के बैठी हैं तुम्हारे लिए कि पहले तुम आओगे, खाना बनाओगे, ये वो. एंड देन आई वांट टू कम
बैक टू द पॉइंट कि आपको फिर भी एक जॉब में वीकेंड की छुट्टी मिलती है, साल की 24 लीव्स मिलती Whatever, है, सिक डेज मिलते हैं। यहाँ पे तो योर वाइफ इज द बाय डिफॉल्ट हाउस मैनेजर इवन ऑन द डेज व्हेन शी इज सिक, इवन ऑन द डे व्हेन शी इज वर्किंग, इवन ऑन द डे व्हेन शी इज एग्जॉस्टेड। तो उनको भी फिर ये सारे बेनिफिट्स दे दो, नो प्रॉब्लम, देन यू विल बी एन इक्वल हाउसहोल्ड। Yeah. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट मैरिज इज अ पार्टनरशिप, Yeah. एंड इन अ पार्टनरशिप आप ये नहीं देखते हो कि एक इंसान डूब रहा है Correct. काम में, घर के काम हो या कुछ भी हो, एंड द अदर सिट्स बैक एंड सेज कि मैंने तो पैसे दे दिए ना, ये मेरा तो डिपार्टमेंट ये नहीं है, मेरा तू काम देख ले। नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, तू देख ले टाइप थिंग। ओके, सो वी थॉट ऑफ दिस फन लिटिल गेम। ओके, आई विल आस्क करण सर्टेन क्वेश्चंस टू चेक इफ करण रियलाइजेस कि मेरे बिना करण का जीवन कैसे चलेगा। ओके, आई एम अबाउट टू गो होम फॉर अ फ्यू डेज फॉर माई PhD थिंग, सो लेट्स सी इफ करण कैन फाइंड आउट वेयर एवरीथिंग इज इन द किचन। ओके, एंड इफ करण सेज अ राइट आंसर, I will give him ₹1 or 1 puppy. Yeah. Okay. So Karan, tell me, where is the sugar in our kitchen? Sugar is on the left hand side rack, नीचे रैक में, लेफ्ट हैंड साइड रैक में बोलूंगा मैं, नीचे पड़े हुए ब्राउन शुगर। Very good. और राइट One puppy. और व्हाइट शुगर जो पड़ी हुई है वो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे पीछे स्टील के डब्बे में, ग्रीन कलर के घी के डब्बे में। Wow. Very good, guys. Very good, guys. Okay. Where is Ruh Afza in our household? राइट हैंड साइड कॉर्नर रैक, Top shelf, down shelf. टॉप शेल्फ। Very good. Where is आटा? आटा जो है वो नीचे पड़ा है रैक में, आशीर्वाद आटे का पैकेट जिसमें Good क्लिप job. लगी हुई है। Very good, guys. See, Karan is passing with fly colors. Okay, one more thing that I want to ask is, जिस तवे पे रोटी बनती है, हाँ, वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो जहाँ पे नीचे क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये आटा पड़ा हुआ है उसके नीचे ऐसे दबा हुआ है पूरा वो। क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। शी इज अ ट्रिक क्वेश्चन, अभी से ट्रिक क्वेश्चन पूछा उसने। ओके फाइन, ठीक है। एंड तुम्हारे टिफिन के डब्बे कहाँ पे पड़े हुए हैं? वही रैक के ऊपर वाले, नीचे वाले में, मतलब देयर आर 2 रैक्स, तो नीचे वाले में तवा है, ऊपर वाले में टिफिन के डब्बे। Very good. See, guys, Karan has come such a long way. He, in the morning when we wake up, I will just give you a understanding of our day. Okay, in the morning when we wake up, I prepare my tea where I put like thoda sa lavender and salt and all of that करके. Karan has his warm water. I do my journaling. Karan does his journaling. We play with our kittens, and at some point of time, we go to do our morning business. हम लोग brush करते हैं. In all of these things, then I get to making breakfast, and Karan starts to do the house chores around. Like for example, सारी चीजें जब जगह पे रख देना जो घर में रात भर में किटन्स ने उड़ा दी होती है, वो हम लोग सारी जगह पे लगा देते हैं while I make the breakfast. उसके बाद Karan goes सारे कपड़े धोने के लिए डाल देता है. In the meantime, हम दोनों मिलके breakfast के लिए जितने फ्रूट्स काटने होते हैं हम वो काट लेते हैं, and we keep everything ready. Once everything is done, Karan का टिफिन पैक हो जाता है, which we both do together. Karan टिफिन पैक कर रहा होता है, मैं फ्रूट्स काट रही होती हूँ. So we are together in the kitchen in the morning. After which we go take a shower. After taking the shower, we sit, we meditate, and we have started to do these things before our meditation. पहले हम लोग बाद में करते हैं, so that mentally we are mental load free. Yes. कि हमारा टिफिन भी पैक हो चुका है, हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, हमारा घर भी नीट एंड क्लीन है, कपड़े भी डल गए हैं, and now we are just supposed to meditate and start our day. Yeah. But even after that, Karan still knows that once he leaves the house, there are a lot more things that I need to do. So Karan, can you please throw some light on the list that you've made to prove to me that you understand my mental load? I think सबसे बड़ा mental load जो है, you take a lot of things into consideration that कि kittens का जो है their litter is gone, उनका litter पड़ा है या नहीं है, खत्म हो गया. You also take a notice of our skin care routine. You also take care of vegetables है कि नहीं घर में. You also take mental load of washing machine, dishwasher, वो सारी चीजें हैं कि नहीं. You also take load of your grocery shopping. You also take a note of कि tissue papers हैं कि नहीं, rolls हैं कि नहीं बरोबर घर पे. You also take a load of कि अगर कुछ खराब हो गया है तो उसको बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है. You also remind me that कि करण आज हमको यहाँ पे shopping करने जानी है. This is not happening. You also take care of smaller things in house like dusting कब करनी है, maid को कब बात करनी है. I try to take that load, but you have this whole mode where Superman mode sometimes that कि तुमको सब task पता होते हैं. I
try to do it. I am trying to get perfect in it. I'm trying to take like this. I will take it as a compliment itself. I'm complimenting myself क्योंकि मैंने मेहनत की है कि मैंने अब वो लोड लेना चालू कर दिया है कि घर के vegetables is Shoki's responsibility. I try to get fruits. I try to understand that what I can be better at, and also I have started to understand that जो morning में जैसे शोकी ने बताया हमारा routine, right? So one bigger thing which I have done is कि जितना मेरे से बन पड़ता है मैं किचन को साफ करने लग जाता हूँ क्योंकि मैं निकल जाऊंगा ऑफिस के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे पास, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. तो व्हाट आई डू इज जितना मेरे से हो सकता है मैं किचन साफ करने की कोशिश करता हूँ, सारी चीजें जगह पे लगा देता हूँ, तो एटलीस्ट शोकी का थोड़ा मेंटल लोड कम हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई डू जनरली एंड बेसिक. एंड वन थिंग विच रियली क्लिक्ड मी एंड आई थिंक आई वाज वाचिंग अ वीडियो इज जो मेंटल लोड की बात कर रहे हैं, राइट? द रील बेसिकली जस्ट सेड दैट कि द डे यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल concept in the house as a man, that there are multiple things around the house to be done. You need to open your mind and see what are the tasks that your wife is doing. आपके सामने वो टास्क है. अगर आप अपनी आंखें खोल के वो टास्क को देखने लग जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितना सारा काम घर पे है. तो that is what changed my perception. I started seeing that कि शोकी अगर कोई काम कर रही है उसके बाद क्या है, उसके पहले क्या है. So for an example, if Shoki is chopping, cooking and doing everything, so if Shoki is doing that, what I will do is I will immediately, after she has done the chopping board, I will take the chopping board, clean the garbage, put it in the dustbin, so that those are the smaller things which happens. And वो सारा काम Shoki को अकेले नहीं करना पड़ेगा. I can be a part of it. I can become a sous chef for her is what I would call it. So ये सारी चीजें जो है, आप जिस दिन किचन में घुसोगे और आप सारी चीजों को देखने लग जाओगे कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए. एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग, मेंटल लोड विल गो अवे. सो मुझे ना एक चीज याद आ रही है कि थोड़े दिन पहले ना रात को जब हम लेट हो रहे थे एंड आई वाज ऑन द बेड, आई वाज अबाउट टू स्लीप, बट यू वर पिकिंग अप योर फोन एंड यू वर कॉन्स्टेंटली ऑन योर फोन एंड आई आस्क यू दैट किशोर व्हाट आर यू डूइंग, एंड यू वर ऑर्डरिंग ग्रोसरी फ्रॉम Amazon and you were trying to see a lot of things. What I realized at that point of time is that ki women do not have the luxury or the bandwidth to stay or chill when it is time to chill, because your brain is constantly working. Your brain is constantly telling you that am I missing this, am I missing this, because you are being trained, you are engraved with lot of things in your life. So आप लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप लोगों को चाहिए भी कि मेरा मन शांत हो जाए, आपका जो दिमाग है वो आपको शांत होने नहीं देगा, because you are constantly working. And only men have this luxury, I believe, that कि chill मारना है, सोना है. You do not have that luxury. And I really respect that day. I think I realized that how mental load plays a very very important role for a woman. So I think what I have realized it for a longer period of time. I used to always tell you that कि यार घर का काम तुमको नहीं करना है तो तुम किसी मेड को दे दो, किसी को हायर कर दो, you know. But I did not realize that कि अगर हम किसी को काम दे भी देंगे या किसी को कुछ बोल भी देंगे, there will always be this mental load that will go on in your mind कि भले ही physically वो कर रहे हैं, mentally तुमको तो उनको बोलना पड़ेगा सारी चीजें. Then I realized that is technically not equal division of labor when I am at home. It is not equal responsibility sharing, because मैंने जो अपना काम था वो तुमको दे दिया, तुमने वो काम शायद पास भी कर दिया है, बट तुम्हारा दिमाग हमेशा ऑन रहेगा उस चीज में. It just became that it was sort of an emotional burnout with a smile. You always said that कि हाँ ठीक है, तेरे को जो करना है वो तू कर ले. But then there was this remorse and emotional burnout that I started understanding. अगर ये continuous चलता हमारी शादी में तो शायद आज हम जो ये discussion कर रहे हैं वो नहीं करते. And I also want to give you a perspective here, and to every man who's listening. If you think that your wife has stopped being physically intimate with you, or your wife is constantly always tired or constantly always angry or saying no to things, or being irritated at all points of time, please understand that her mental bandwidth is over with all of these small things that she needs to look after around the house, right? If she does not have an emotional connection with you, she will not be able to have a physical connection with you. And if her emotional connection with you will only happen when she has the capacity, she has the bandwidth left in her to actually connect with you. The only thing she's doing right now is being the house manager and doing everything else for everyone around the house. And in that whole thing, the one thing that she needs is your support or
or your presence around her while doing all of these things. This is how Karan had started supporting me. Even if he did not know what to do around the house immediately, he used to be around me to keep trying to notice ki, oh, you need this next, right? And then he would quickly get that and be there around. Like he said, he was the sous chef. So till date, he's not the one who takes over and cooks everything for me. But he makes sure that all I need to do is cook. Everything else he will take care of. Because he understands that this is not the kind of load that he is capable of taking. So he will take everything else off my plate so that I'm able to manage that one job together. I will also tell you some basic benefits of doing chores together, right? हम लोग कपड़े धो के रख देते हैं. Every morning for those 5 minutes when we are folding the clothes together, that's our connection time. That is the time we share कि आज हमको क्या क्या करना है दिन में, हम किसके साथ मिलने वाले हैं, हमारी कितनी मीटिंग्स है, हमारे कितने कॉल्स है, क्या होने वाला है टाइप. So doing chores together can be a great way to connect emotionally as well, right? There are also fun things that we do around that same time, like our kittens start playing with the clothes that we are folding. So there is a connection that is happening between me and Karan. As a family, we are getting together to do things. That is what I saw in my own house as well. अगर हम लोग संतरे छील रहे होते तो हम चारों बैठ के संतरे छील रहे होते थे, right? So it was a connection time. Understand that instead of blocking it by saying that this is not a man's job or I am providing for this house, so I will not be doing these things. Think of it as something that you are doing to connect with your family. Absolutely, yeah. And this, we are taking this episode as a man and woman episode, as a man-wife episode, husband-wife. But you guys can start doing it even if you're not married. You can do it for your mother. You can do it for your sister. Try to change their mindset if they think you don't belong in the kitchen. Yeah. Because that is where the chain will begin. Karan still feels bad about the fact that back then he did not do stuff around his own house. Yeah. And everything was handed to him in his hands, right? Now, whenever we meet the family, we make sure कि ऐसा ना हो. We are all together in the kitchen, making everything happen together. Okay? Yeah. So, if you are a man listening to this and you're feeling uncomfortable about this whole thing, it's okay. You are not broken, but you do have a choice. Yes. And you can still change it. Yeah. For this exact purpose, Karan has shared his own mental load checklist. Yes. Okay? He has taken some time to create a mental load checklist in our household. Yeah. Okay? And then I asked him that why don't we share it with you guys? Yeah. So Karan has created a proper PDF which you will find in the description below. It has a list of all the mental load that women take care of around the house. Okay? And this is specially for men. Please have a look at those lists and understand what mental load exactly means. Yeah. And also, if you feel that there are few of the things that you can take control of or charge of, please do it. They are very, very simple, very, very basic. अगर वो भी लेने लग जाओगे, तो I think your relationship will just flourish. And that is what things have changed us. And what this list will make you see is that you will not keep asking for your wife to tell you what to do. The list will show you that these are the things that needs to be done. So you will get to it. You can get to it. Maybe in the initial times, you may need some guidance that okay, ये इस ब्रांड का डिटर्जेंट हम यूज करते हैं या इस ब्रांड का डिश वॉशिंग लिक्विड हम यूज करते हैं. बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड सी कि कौन सा नाम लिखा है उस ब्रांड पे, राइट? So you can do something as simple as checking a list and doing the things and automatically get attuned to it eventually. And to all the women, technically stop telling this that my husband helps me in kitchen, my husband helps me with kids, my husband helps me, doing laundry, my husband helps me with doing so and so things. Please stop using that it is help. It is his responsibility too. The day you start talking about that it's an equal responsibility, it is a shared responsibility, your thought process will start changing. The man whom you are married to or in the relationship will start understanding and take responsibility with his own actions. So make that space for him. And understand that again, this is not about a gender doing a certain kind of role. It is not about men and women. These are basic life skills that you need to know around the house. If your woman goes away for a few days, the house should not come breaking down. It should still be running. You should still know what is where and what will you need at what point of time, right? Yeah. So,
ये अब बंद करते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा है, एक ही वीकेंड मिलता है, हमको बहुत सारी चीजें करनी है, Yes. where we will go and do the work together and Yes. build a more better relationship and Yes. share the mental load, share the physical load, and share the emotional load together. But before we leave, for dear husbands, I want to leave you with these 4 questions. Please ask these to yourself next time you notice how many things your wife is doing around the house. Number 1, how many of these tasks are something that you didn't even realize your partner handles? Okay. Second, which of these you can take full ownership of starting now, starting this month? Okay. Third, when was the last time you said thank you for something you took for granted? And fourth, if your partner went away for a week, for which Karan and I did an amazing exercise today where Karan passed with flying colors. If your partner went away for a week, would you know how to run the house? Yes. Ask yourself that. Okay. So thank you for joining us today. Thank you for giving us your time. Don't forget to get the free mental load checklist in the description below. If you guys want to have a one-on-one chat with us, if you want help with your relationship, if you're struggling in any way, we are always here. The link to book a call with us is also mentioned in the description. And if this episode made you rethink your home, your habits, and your marriage, send it to your partner. Don't forget to like, share, and subscribe. Have the hard conversation about this episode. Talk about it and shift to a different dynamic in your relationship. So, we will see you next week. तब तक हम अपना घर का काम करते हैं. Bye bye.